Assalamu alaikum and welcome back to Inside. The second match of the Tri Series is done. New Zealand have won and have secured their place in the final, and it has made the match between Pakistan and South Africa on the 12th of February essentially a semi final. So, without further ado, let's get straight into it. शुरुआत से चलते हैं टॉस वगैरह हुई एंड साउथ अफ्रीका had a bad first. Bavuma and debutant Matthew Breezy, something. I don't know how he pronounce his name. I'm going to call him Britsky, the way his name is written. So it might be even Matthew Breeze, whatever. Bavuma and Matthew Britsky came out to open, and they had a good start, free flowing cricket दोनों खेल रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली फॉर टेम्बा बुमा एंड साउथ अफ्रीका उसको एक शॉर्ट बॉल से मिली ही वेंट फॉर लाइक पुल couldn't quite get a clean connection. It caught a nick and into the hands of Tom Latham और South Africa lost an early wicket. वहाँ से मैथ्यू ब्रिड्सकी एंड जेसन स्मिथ had a good partnership. Both were playing very aggressive, good cricket. Runs were flowing at a good rate. Boundaries lag rahi thi. New Zealand could not do anything about it. Matthew Breedsky by this point was already in like the 60s, 70s. Jason Smith की भी half century होने वाली थी. That is until Jason Smith ने offset पे यूं करके shot खेली and immediately just ran for the run. But due to some brilliant fielding by Mitchell Santner, who grabbed it with one hand, और immediately उसने कीपर एंड पे मारी एंड जेसन स्मिथ वाज जस्ट अ डेड मैन. जो मर्जी कर सकता था और जो उसने किया it just could not reach it even though he tried to dive. It was still too much. Tom Latham immediately took the bills off और वहां से साउथ अफ्रीका लॉस्ट देयर सेकंड विकेट. खैर उसके आउट होने के थोड़ी देर बाद मैथ्यू ब्रिड्सकी गॉट टू सेंचुरी. लेकिन व्हाट हैपेंड अराउंड दिस पीरियड वाज कि जो फ्री फ्लोइंग क्रिकेट हो रही थी वो रुक गई बिकॉज दूसरे एंड से विकेट्स गिरना शुरू हो गई थी एंड नो वन वाज स्टैंडिंग अलोंगसाइड ब्रिड्सकी ना. दैट इज अंटिल वायन मल्डर केम टू द क्रीज. उसने मैथ्यू ब्रिड्स के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगाई और he made a 50 as well. I'm pretty sure like 60, 64 runs to be exact. Or because of Matthew Britsky's brilliant batting, making 150 runs, which is the highest ever score on an ODI debut by any player in history now. South Africa got to a score of 304, जो थोड़ा सा कम था. You would have wanted like 330, 335 on this pitch. लेकिन it was something that Temba Bavuma would fancy its chances with कि we can defend this. खैर न्यूजीलैंड came out to bat. Obviously रचिन रविंद्रा की इंजरी की वजह से he could not play. अगर उस पर मैं एक छोटी सी अपडेट दे दूं तो according to the doctors it's just a laceration on his forehead. Thankfully मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ खबरें ये आ रही थी after the ball hit him कि it had hit him in his eyeball and there was a chance कि like the bleeding was coming from his eye and like उसका कोई vision वगैरह खराब ना हो जाए. पर from what I've heard he has passed this concussion protocol or it's just a laceration on his forehead. Obviously a laceration is still not good, like that shit hurts. लेकिन it's better than having getting hit on the eye ना. खैर उसको रिप्लेस करने के लिए डेविन कॉनवे आया एंड डेविन कॉनवे he just start from the word go. He looked in good touch. Obviously एक फैक्टर ये भी है कि कॉनवे हैज जस्ट प्लेड अगेंस्ट these guys in the SA T20 तो उसको थोड़ा बहुत अंदाजा है कि how these bowlers bowl and all of that ना. However कॉनवे अच्छा जा रहा था लेकिन मसला ये था कि दूसरे एंड से विल यंग just he did not look comfortable. He just could not get going. उससे बाउंड्रीज लग नहीं रही थी. could not find the gaps. तो eventually उसकी misery ended when New Zealand was around like 50 runs. वहां से फिर केन विलियमसन आया और yeah, as soon as Kane Williamson stepped onto the crease, it was pretty much game over. वहां से New Zealand just did not let South Africa back into the game.
Free flowing cricket, runs were just flowing. South Africa could do nothing about it. To be honest, it was a very weak South African side as well. Senuran Muthusami, Swami, पता नहीं इतनी भारी वो बॉलिंग करा रहा था. वो जूनियर डाला भी वो पता नहीं कहाँ से उठा के ले. वो यार ऐसे T20 कोड़ी कह रहा हूँ, केड़ी इतनी कोई बड़ी लीग है कि उसके लिए आप इंटरनेशनल क्रिकेट को जाया कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की प्रेपरेशन को जाया कर रहे हैं. ये बहुत गलत बात है. ये जो मार्करम नहीं आया, येंसन नहीं आया, ये मिलर लोग नहीं आए. ठीक है यार, आई नो यू वांट टू प्रमोट योर लीग, लेकिन कम ऑन, इंटरनेशनल क्रिकेट मैटर्स मोर. इसी वजह से साउथ अफ्रीका डजंट विन ट्रॉफीज बिकॉज दे देयर प्रायोरिटीज लाइज एल्सवेयर. आपके वेरी इस टीम में कोई एक ही आदमी बंदा था जिसने लाइक कोई 10 से ज्यादा मैच खेला. एक बवुमा हो गया, एक वो वायान मल्डर था, एक कायल वरेना था. तो दो तीन बंदे ही थे ना. जूनियर डाला भी कोई थर्ड स्ट्रिंग इनकी ऑप्शन है. मैथ्यू ब्रिड्स की परफॉर्म कर गया, वो भी बैकअप है. जेसन स्मिथ भी कौन सा इतने ज्यादा मैच खेलता है. फिर वो मुथु सामी जैसा बकवास बॉलर, ना उसकी कोई बॉल टर्न हो रही थी. डाला का एक्शन देखो, पता नहीं यूं यूं करके बॉल फेंकता है. पर मैं इतनी बातें पढ़ रहा हूँ साउथ अफ्रीकन के बारे में, देखना है इन्हें पाकिस्तान के साथ क्या करना है. खैर Williamson and Conway just kept going, or there was pretty much nothing the South Africans could do about it. Unfortunately for Devin Conway, he fell just shy of his 100. बड़ी प्यारी उसने स्क्वायर कट सही था मारा था, लेकिन गुड कैच बाय द फील्डर टू डिसमिस हिम. लेकिन वहां से फिर मसला ये है ना, न्यूजीलैंड वाज रूथलेस. दे डिड नॉट लेट साउथ अफ्रीका बैक इनटू द गेम ना. उन्होंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल, एक्सेप्ट फॉर विल यंग टू सम एक्सटेंट, New Zealand was in control of the game. Williamson scored a very brisk century, which is rather uncharacteristic of him, which is also his first ODI century in 2060 days. His last century was, I'm pretty sure, in the 2019 World Cup. So a big gap between his 13th and his 14th century. Um Mitchell, I'm pretty sure didn't play a lot, like he made a few valuable runs. फिर एंड पे आके फिलिप्स just did what he did against Pakistan. Aggressive cricket खेली, दो तीन छक्के छक्के मारे, मैच खत्म. न्यूजीलैंड win comfortably and make their way into the final. खैर, what this does is कि this has essentially made the Pakistan South Africa game on the 12th winner takes all. Na? Whoever wins goes to the final. Obviously, some of you might be thinking कि अगर बारिश हो गई तो क्या होगा. I'm pretty sure कि अगर बारिश हो गई तो South Africa will make the final, because if I'm correct, they have a superior net run rate to Pakistan. लेकिन अभी फिलहाल पूरी सर्दियों में पाकिस्तान में बारिश तो हुई नहीं, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी बारिश. तो अगर यही टीम खेली साउथ अफ्रीका की अगेंस्ट पाकिस्तान, तो आई एक्सपेक्ट के पाकिस्तान शुड विन ना. लेकिन अगर बिकॉज ऐसे T20 खत्म हो गया, अगर उनके जो मेन खिलाड़ी हैं वो आ जाते हैं, तो देन इट विल बी अ बिट मोर इंटरेस्टिंग. क्योंकि पाकिस्तान हैज बीटन साउथ अफ्रीका, बीटन क्या, वी हैव वाइट वॉच्ड देम जस्ट लाइक अ मंथ और सो अगो. लेकिन उसमें बहुत बड़ा फैक्टर एक साइम अयूब का था, बहुत बड़ा फैक्टर सुफियान वकीम का था, इवन न्याजी प्लेड अ फ्यू good innings. So this is pretty much a completely different Pakistani side to the side which won in South Africa. So that would be an interesting watch as well. So let's see what happens. एक और चीज़ जो मैं एक mention करना चाहता हूँ before I end the video. I don't like to spread negativity here on my channel. I want a positive community कि हम सारे मिलके like we have like good debates and all of that. लेकिन I believe I should talk about this. रचिन रविंद्रा को जो उसके फेस पे बॉल लगी, काफ़ी इंडियन क्रिटिसिज्म और एक लिहाज से कह सकते हैं प्रोपेगेंडा आया कि दिस वाज ऑल ड्यू टू द फ्लड लाइट्स इंस्टॉल्ड इन गद्दाफी स्टेडियम, कि बिकॉज ऑफ द फ्लड लाइट्स रचिन रविंद्रा कुड नॉट सी द बॉल एंड दैट इज व्हाई ही गॉट हिट इन द फेस. यार आप देखें, फ्लड लाइट्स आर 70 फीट इन द एयर, ठीक है, और
मैं फिर भी मानने के लिए तैयार होता अगर खुशदिल शाह ने फ्लोटेड शॉट मारी होती। खुशदिल शाह ने एब्सोल्युटली फ्लैट शॉट मारी थी। इट वाज फ्लैट, इट वाज कंप्लीटली फ्लैट। Rachin Ravindra only made one mistake, he misjudged how fast the ball was coming na? And हो जाता है, anyone who plays cricket knows कि sometimes you just misjudge the pace of the ball. So what happened to him was unfortunate, it was a tragedy, but it was also something that no one had any intention of doing. इट वाज जस्ट अनइंटेंशनल। खुशदिल शाह ने ये शॉट उधर मार के इसलिए नहीं मारी कि रचन रविंद्रा इंजर्ड हो जाए। एट दैट पॉइंट दैट वाज द लीस्ट ऑफ पाकिस्तान वरीज। फ्लड लाइट्स का कभी पहले मसला हुआ नहीं, ना मसला इन द फ्यूचर होगा। दिस वाज नॉट ड्यू टू द फ्लड लाइट्स। एंड एक लिहाज से कार्मिक जस्टिस ये हुआ, आई मीन आई डोंट लाइक doing this, लेकिन एक लिहाज से कि I saw a lot of posts on social media कि like Indians were criticizing Pakistan for floodlight blah 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 और उनकी floodlights बंद हो गई। तो this is just all like this is nursery grade stuff यार, come on guys, grow up, ठीक है, grow up। इस तरह के फजूल लड़ाई से किसी को कोई फायदा नहीं होना। Indians need to accept कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होनी है, एंड पाकिस्तान नीड्स टू accept कि इंडियंस आर नॉट गोइंग टू लिसन, उन्होंने ये करना है, ठीक है। आई एम सॉरी, आई डोंट मीन टू स्प्रेड एनी नेगेटिविटी, लेकिन दिस इज जस्ट नर्सरी ग्रेड लेवल फाइटिंग ना, बच्चे नहीं है ना यार, व्हाट इज दिस। ये क्या है, और तुम लोगों ने फ्लड लाइटें सही नहीं लगाई हुई तो नजर नहीं आ रहा फील्डर को, हाँ 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 तुम हमारी फ्लड लाइट पे बात कर रहे हो, तुम लोगों की फ्लड लाइट चलती नहीं है, व्हाट इज दिस। ग्रो अप यार, कम ऑन, ग्रो अप। खैर बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। एंड में थोड़ा सा मोर डिफरेंट टोन देन आई एम यूज्ड टू। एज आई once again I'm going to reiterate, I'm not targeting any particular fan base or any particular person. I'm just having a discussion here कि this is just nursery grade stuff ना, you shouldn't be doing this। खैर बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, relatively shorter video because पाकिस्तान का एक मैच नहीं था, तो आई नो मोर अबाउट पाकिस्तानी प्लेयर्स ना, कि अब जिस तरह मुबस्सिर खान या इरफान मिनाज कोई डोमेस्टिक खिलाड़ी खेल रहे थे, तो आई वुड नो अबाउट देम कि लाइक whether they were selected rightfully or blah blah, but लेकिन ये South African guys I don't know who Senuran Muthusami is, तो that's why I didn't go too much into the detail। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई और वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप ये चाहते हैं कि आप मेरे सोशल्स को फॉलो करें, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे अपने सोशल्स का लिंक दिया हुआ है, उधर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड yeah, that's it for today, और मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।